A very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha from LPS Public School. And class, today we all are going to continue our chapter number 7 from your civics textbook. The name of the chapter is Understanding Marginalization. In our last chapter, we were discussing about marginalization and Muslims. We were studying about we were like trying to understand the marginalization in minority section with the help of Muslim minorities. Okay, so now if we will discuss the marginalization in the terms of economic and social terms, just look at this paragraph here. Now, economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well. Like other minorities, Muslims' customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Okay, so if we look at the economic and social marginalization or the experience of economic and social marginalization by Muslims, they have other dimensions also, other paths also, other consequences also. For example, if we look at the customs and practices of Muslims, they are like quite different from the majority of the society, majority of the population. It is seen as it is quite distinct. Sometimes it is quite distinct. The like all some, not all Muslims may wear a burqa. You might have seen this. Some may wear a burqa, sport a long beard. Some male Muslims have this long beard. Even some of them wear fez, a white cap. ठीक है, एक छोटी सी white cap सी होती है, उसको fez बोला जाता है. They even wear fez. So these become ways to identify all Muslims. Like अगर हमें इस type का पहनावा देखने को मिलता है, तो what we can how we can identify that person? We can identify that person as a Muslim. So because of these, they tend to be identified differently, and some people think they are not like the rest of us. And because of their attire, some of the people identify those person as different. They think they are not like us, they are like quite different from the rest of us. So often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. And बहुत बार क्या होता है, उनके साथ बहुत ही इल ट्रीट किया जाता है, अनफेयर ट्रीट किया जाता है, उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. Do you remember reading in your class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? The social marginalization of Muslims in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. So now you all have remembered that story of Mr. and Mrs. Ansaris, where they were not able to find a house in rent, and when they found a house, like when that landowner get to know about their name, about their religion, she gave them excuse about like कि यहाँ पे तो वेजिटेरियंस ही रहते हैं, वेजिटेरियन खाना ही पकता है. So even like Mr. and Mrs. Ansari is like can smell fish in their neighborhood, or just like उनको excuse दे दिया गया कि यहाँ पे वेजिटेरियंस ही रहते हैं, वेजिटेरियन फूड ही यहाँ पे कुक हो सकता है. So that's why उनको क्या है, रेंट पे घर नहीं दिया गया. बट जो मेन रीजन था, उस लैंड लेडी ने उनको घर क्यों नहीं दिया? बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. सो समटाइम्स
समटाइम्स ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, एंड दिस often leads to ghettoization. Now what is this ghettoization? Ghettoization means segregation, when a particular community lived in a particular place, very far from the main street. That society is known as ghettoization. In simple terms you can say a slum area, जहाँ पे एक जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, एक हो सकता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, या उनके इकोनॉमिक जो कंडीशन है उतनी अच्छी नहीं है, तो उस टाइप के जो लोग हैं जब एक ही एरिया में रहते हैं तो उसको हम गेटोइजेशन बोलते हैं, सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ द कम्युनिटी. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. Sometimes ये जो prejudice जो हम पहले से ही thinking कर लेते हैं ना, ये है तो ऐसे ही करते होंगे, ये community है तो इनके अंदर hatred ही होगी, तो ये जो prejudice है हमारे अंदर बहुत सारा violence की feeling को develop करती है, hatred की feeling को develop करती है. Okay, so now just look at this yellow box. I live in a Muslim dominated area. Some days back during Ramzan, there was some disturbance that started taking a communal outlook. My brother and I had gone for an iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively. On returning home, my brother and I were asked to change our clothes to jeans and t-shirt. Now, when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd. Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? So now this is Annie A. Faruqi. So this is a statement, or this is a statement from Annie A. Faruqi. She lives in a Muslim dominated areas, and रमजान के टाइम पे काफी कम्युनल राइट्स वगैरह चल रहे थे, बहुत ज्यादा सिविल वॉर के सिचुएशन हो गई थी, वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है क्रिएट हो चुका था, कम्युनल राइट्स काफी हो रहे थे. तो उसके ब्रदर और उसने एक इफ्तार पार्टी में, उनके नेबरहुड में एक इफ्तार पार्टी हो रही थी, तो वहां जाना स्टार्ट किया एंड जाने का सोचा, और वो गए वहां पे, वो अपने ट्रेडिशनल आउटलुक में गए थे, वो लाइक शेरवानी और सलवार कमीज पहना था उन्होंने. सो घर जाते टाइम उनको बोला गया कि आप लोग जीन्स और टी शर्ट पहन लो. सो जब सब कुछ ठीक था, आई वंडर व्हाट वाज द रीजन दैट वी वर आस्क्ड टू चेंज आवर क्लोथ्स एंड व्हाई आई डिडंट फाइंड इट ऑड. Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? Now this is a very important question which Annie A. Faruqi is asking here. क्या मेरे क्लोथ्स ही मेरी आइडेंटिटी है, और इन क्लोथ्स के वजह से मतलब मुझे डर के रहना पड़ेगा और मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा सोसाइटी में? So in the above section of this chapter, we saw how in the case of Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. We can find economic marginalization as well as social marginalization here. Even we talked about Adivasis also. हमने Adivasis के बारे में भी पढ़ लिया. Even we in our earlier classes we talked about the discrimination of women also, कि जो gender inequality भी हमने देख ली थी. So that is also a marginalization. The experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures, and safeguards to redress this situation. All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to release these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. So different peoples are facing, are having the experience of like different types of marginalization in our society, and but this is the duty of us as a
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जितने भी राइट्स हैं हम उन्हें क्या करें, हम फॉलो करें। एंड जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो भी लॉज और पॉलिसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी क्या है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट इज आवर ड्यूटी कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो जो हमारी कंट्री की यूनिकनेस है, जो हमारी कंट्री की यूनिकनेस है, जो डाइवर्सिटी है, हम उसको भी क्या है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट का एक कमिटमेंट है कि वी ऑल आर सपोज टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, हमें इक्वालिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। वी ऑल आर लाइक यूनिक क्रिएचर्स एंड वी हैव टू maintain that diversity which makes our country a unique country. ठीक है? So if we conclude this chapter, in this chapter we have tried to understand what it means to be a marginalized community. What is we talked about what is marginalization. We comprehend the term marginalization, concept of marginalization. Marginalization means to make a group of people feel unimportant and isolated. That is marginalization. And we have gone through so many examples. We have gone through 2 examples in this very chapter. We have tried to look at this through the experience of different marginalized communities. There are different reasons for each of these communities being marginalized. ठीक है, कुछ के कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट हो गया, कुछ का जो है उनका ड्रेसिंग सेंस हो गया, इकोनॉमिकल रीजंस हो गए, सोशल रीजंस हो गए, रिलीजियस रीजंस हो गए. सो देयर आर सो मेनी रीजंस, डिफरेंट रीजंस, जिसके वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज जो है मार्जिनलाइज्ड जो है फील करती है. Each experiences marginalization in different ways. We have also seen that marginalization is linked to experiencing disadvantage, prejudices, and powerlessness. Marginalization is related to experiences of having disadvantages, the prejudices and powerlessness. That is also उसको marginalization को इस चीज से क्या किया गया है, लिंक किया गया है. In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read more in the next chapter. We will talk about it. Marginalization results in having a low social status, not having equal access to education and other resources. These are like some of the features, you can say, features of marginalization. The person or the community who felt marginalized, they have these types of features. उनका social status काफी कम होगा, या फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वल नहीं होगी, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Yet the lives of marginalized people can and do change. Thus, no one is marginalized all the time in exactly the same way. If we go back to the 2 examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their culture distinctiveness while having access to rights, development, and other opportunities. So, what marginalized communities want? They want to maintain their cultural डिफरेंसेस, जो डिस्टिंक्टिवनेस, कल्चरल यूनिकनेस है, उनको मेंटेन रखना चाहते हैं. इवन दे वांटेड टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वांटेड टू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स व्हिच मेन स्ट्रीम इज हैविंग. ओके, सो जो भी डेवलपमेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको भी वो क्या करना चाहते हैं, उन सबका भी एक्सेस हो उनके पास. So we will talk about confronted marginalization in the next chapter, or we will talk about it later on. Okay, so now just look at this figure. The Sachar Committee report also debunked other prevalent myths about Muslims. It is commonly believed that the Muslims prefer to send their children to madrasas. The figures show that only 4% of Muslim children are in madrasas, whereas 66% attend government schools and 30% private schools. So Sachar committee की report है, and this committee give their like बोलते ना
डिबंक्ड का मतलब क्या होता है? डिबंक्ड का मतलब समथिंग यू कैन से कि जैसे कि खारिज करना, हम बोलते हैं ना खारिज करते हैं, एक्सपोज करना, टू एक्सपोज, कि ये मिथ्स हैं मुस्लिम्स के, कि कॉमनली ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो नॉर्मली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने बच्चों को मदरसाज में भेजना पसंद करते हैं, बट दिस इज लाइक फिगर्स क्या शो करते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओनली 4% मुस्लिम्स जो है वो मदरसाज में जाते हैं, 66% जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, और 30% जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। तो ये सचार कमेटी की क्या थी? रिपोर्ट थी। ठीक है, डिबंक्ड का मतलब खारिज करना, या फिर जैसे कुछ एक्सपोज करना, या फिर एक्सपोज करना, यस, कि या फिर बोल सकते हो कि पर्दाफाश करना। ठीक है, कि उन्होंने एक इसके चैलेंज किया था कि ये जो मिथ है इस चीज को चैलेंज किया था, मुस्लिम्स के मिथ को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीवन।